Yeah. Guys, will be starting in a while. We'll just get on to it at around 6:05. Till then, just I'll be waiting for people to join the meet. Okay. Till then, I mean, you guys, if you have any queries, feel free to let me know. If you guys have any particular expectations, do let me know. I'll be trying to keep the session very interactive and like I hope you all will interact with me. So feel free to unmute yourself or like raise your hand, whatever you want to, so that I can take up your doubts or whatever it is. All right.
Good evening, everyone. The session is going to start soon. मिला होगा। हे हो गई। Let's get on with this, guys. You can start. I'll take over from there. Okay. Let's just start. Sure. Am I audible? Yes, Yamini, you are audible. Thank you. Good evening, everyone. We're really delighted to have you all here together with us on the final workshop of Hacktoberfest' 2021, the fest that encourages the participation of everyone in the open source community and that grows bigger every year. Prior to anything, we would like to inform you that the resources and recordings of the last two sessions on open source and GitHub by our team members are available on the open source Discord server, and they're even uploaded on our YouTube channel. So in case any of you have missed any of these, don't worry, just go join the server and check out the stuff there. In fact, all the updates are being uploaded on the server itself. So be active and stay connected for the future updates. So here today we are back for you all with another amazing session on machine learning. In case you have any doubts during this session, they all be cleared on the. Still, in case there are any of the doubts left, just note them down. Pause for a while. We'll allow you to raise your hand and come speak on the stage. Hope you all gain immense knowledge and enjoy to the fullest this evening. Before starting, I would like to tell you all about Microsoft Learn Student Chapter, the organizer of this webinar. MLSC is one among the elite in technical clubs at Thapar Institute. It is an open source community which is dedicated to elevate the coding culture at Thapar as well as all over the nation. We at MLSC believe that if youth is encompassed with appropriate technology, it holds the power to revolutionize the world we perceive today. And we have done a fair share in that by conducting various tech events, community workshops, and allied things. We all pave our journey together, not just as a society, but as a family. From now on, I would like to hand over the session to Mr. Pranjal Gupta, who is always fascinated by research and innovation. Earlier, this session was to be taken by Dr. Prashant Singh Rana sir, who is the president of MLSE, but due to some unavoidable situation, he couldn't take it. So now it will be taken by Pranjal sir. Microsoft Learn Student Chapter feels immense fortune to have Pranjal sir as its General Secretary and the Microsoft Learn Student Ambassador. He has a keen interest in mathematics and deep learning. Last year, he took a 2-day long workshop on the topic of machine learning, which was a great success and it was very informative. He also has experience in industrial projects in the field of web development and Internet of Things. Today, he'll educate you all about an exciting topic, machine learning, which is a subfield of artificial intelligence. You all may have been using a device like Fitbit, which is a fitness tracker, or an intelligent home assistant like a Google Home, which uses this concept of machine learning. So let's get deeper into machine learning. Over to you, sir. Thanks a lot, Yamini, Yashika, and Tarun, for the great introduction. I'll take over from there.
Uh, just a few pointers to everyone. I would really like it if we can keep this session as interactive as we can. So, and hence I've given everyone the permissions to speak at any point. Feel free to just raise your hands at any point where you feel lagged off, or like if there's something that you don't understand. Feel free to raise hands, and it would be my pleasure to invite you all on the stage so that we can have a one-to-one conversation. All right. So let's get started with it. I hope my screen is visible to everyone. Just a confirmation. Yes, Yes, it is visible. it is. All right, all right, all right. So, I mean, let's get started with it. Okay. So, I mean, I would really like to keep it very informal. Okay. So, that is how I'm going to take this workshop. All right. So, like, yeah, introduction to machine learning. Like, machine learning is one term that every one of us might have heard at some point in our lives, right? Whether you've watched Iron Man movies, I mean, Marvel, the whole of it is like half of it is based on AI, right? So a lot of us have already heard the terms like AI, machine learning, deep learning, and like being a college student, all of this seems very fascinating. Like, I mean, how is a particular thing like? Honestly, I'll tell you my opinion. जब मैं college आया था ना, तो it was all very fascinating to me, and I used to think that artificial intelligence was something that will be coming in a near future, and that is not a reality right now. Okay, that is what used to come to my mind when I used to hear the term artificial intelligence or machine learning, like, or any sort of that kind of a thing. Like, ठीक है, मैं भी ऐसी तुम लोग की तरह ऐसे टोनी स्टार्क को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, जिसके जारविस से मैं इतना ज्यादा fascinated था कि सोच सकता था कि like, I mean, these are all VFX, and not, like, none of that can be converted into reality in a very near future. But I mean, like, here we are, talking about machine learning, and the whole of this session, like, to be very honest, machine learning is not a field that can be like, machine learning is not something that you can learn in a day or even a month. Okay, you need persistence over this field, and what I want to do today is like introduce you all to this field, like, right? Okay, I mean, I'll tell you very honestly, like, this has been like, this is something that I very religiously believe in, and that is that you only excel in a thing in which you are really interested in. Okay, so, and how that interest develops is, I mean, for me, I'll tell you an incident. I used to be in my first year in my college. Okay, I was sitting with my friend in the open air theater in my college, and suddenly a drone came and hit my friend's head, like that day. ठीक है, both of us, like, हम इधर उधर देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है. एंड देयर वाज अ गाय, like, इधर भागता हुआ आ रहा है, सॉरी सॉरी बोलता हुआ कि सॉरी, ऐसे टकरा गया. एंड like, believe me, like, amidst all of that, जिसमें मेरी दोस्त की रोने निकल गया और मेरे को आइसक्रीम को खिलाना पड़ा उसको, I mean, that apart, I mean, I'll tell you, see, that was very fascinating for me to see something like drones जो कि हम सिर्फ movies में देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, to see that in reality, and that really piqued my interest. Okay, so that is what the aim of today's workshop is going to be. What I want to do is pique your interest into this field, and let me tell you what machine learning is, and let me tell you why you need to get into machine learning. All right. So without further ado, let's start with it. Okay. So, what are we going to cover in this, like, today's session? Okay, whatever the hell this mess ML is, okay, we'll cover that. Okay, we'll see why you need to get into ML. We'll see what makes up ML, what's the role of mathematics, the best approach, how you can start with ML, and all of that will be covered in this workshop. Okay. Apart from that, feel free to ask your doubts in between. Feel free to ask for more resources. We'll also hold a small quiz in between. Okay, and I mean, if you are from, like, I mean, obviously due to COVID, we cannot do it at a larger scale. But yeah, for the students who are in Thapar University or in the Punjab region, Patiala region, if they happen to win the quiz, we'll be sending them some GitHub goodies as well in the spirit of Hacktoberfest that's going on, and for what we've like held this session for. Okay, so first of all, what is this mess ML? And I mean, why am I interchanging a lot of terms? I mean, see here, there's this picture in which there's written artificial intelligence. There's this topic machine learning. I'm speaking the terms deep learning as well. What the hell it is? All right, what is machine learning? I mean, if I have to teach kid what machine learning is, I would simply break the word into two. And I mean, what is the process of learning? I mean, by definition, if we go by it, right? What is learning? Learning is a process by which a system improves its performance by experience. Sounds complex, does it?
अब यही प्रोसेस को अगर मैं मशीन में रेप्लिकेट करूं तो दैट्स मशीन लर्निंग. बट आई मीन यार, ये लर्निंग की इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन क्यों? ठीक है, a system improves its performance by experience, by performance measure T. I mean, there are a hell lot of explanations for. I mean, there is this definition of machine learning that says like a system that trains on experience E by increasing its performance P over the time T. So I mean, those kinds of definitions. So like, to give you an example about what learning is, let's take the example of Pranjal, who studies in his test and constantly fails. Okay, I'm studying for a topic. I give an exam, I fail, I learn more. I try to give that test again. I learn new things. I repeat this process multiple times till I've got a satisfactory results. Right? That is when my learning is happening. It's not like मेरे को पहले से आता था कुछ भी. ठीक है. What I did was I took some performance measure. That was my test. I had some experience that was failing, and मेरा परफॉर्मेंस मेजर वाज माय स्कोर, जो कि बार बार रिपीटेडली टेस्ट देने से वो इंक्रीज हो रहा था. तो दैट इज माय लर्निंग प्रोसेस, राइट? ठीक है, तो मैं बार बार एक चीज को लर्न कर रहा हूँ, मैं उसको अपने ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, एंड अगर मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स मेरी लर्निंग सही डायरेक्शन में है. अब मुझे यही पूरा का पूरा प्रोसेस एक मशीन में रेप्लिकेट करना है, एंड दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट. ठीक है, replicating this process of learning in machine is what machine learning is. ओके, अब मशीन लर्निंग को सिखा तो दे, ठीक है, अपना पढ़ना काफी नहीं था क्या? लाइक अभी तो ये जेई और बोर्ड्स के बकवास पंगों से निकल कर आए थे कि अब मशीन को भी सिखाना शुरू कर दे. ठीक है, करना क्यों है मशीन लर्निंग? ठीक है, टू जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मशीन लर्निंग इज, या फिर वेयर यू सी डीप लर्निंग और एआई, लाइक आई मीन फॉर नाउ लेट्स जस्ट stick with the word machine learning. ठीक है, deep learning, artificial intelligence will be considered. Uh, does anyone have a doubt? Uh, I'll mute. Anyhow, so like, what is this machine learning, या फिर हम इसको कहाँ पर देख पा रहे हैं? ठीक है, so just to give you an example, I guess a lot of us must have heard about automated cars, the automated vehicular detection and driving that is being implemented by BMW and Tesla all over the world. That's very successfully running. We all are watching robots. We have heard about neural links, which has the capability to like mend a person's disability by implanting an AI chip into the mind of a person. We all have seen Alexa and see automatic typing and autocorrects in our keyboards, right? Okay, and all of them are performing fairly decent. I mean, okay, what the duck is not what I wanted to write, but all right, we'll give it to that. Okay, these machine learning algorithms has been proving to be really, really useful and really successful in daily lives of people, and that is the application of deep learning and machine learning. It is literally everywhere. It is revolutionizing the way we are seeing technology today. आज से 10 साल पहले टीवी यूज्ड टू बी अ बॉक्स, इट कन्वर्टेड टू अ फ्लैट स्क्रीन इन सम टाइम. उसके बाद क्या इनोवेशन थी? People introduced artificial intelligence into it. Similarly for phones, similarly for every industrial sector. We'll discuss that later on as well. But machine learning, artificial intelligence, and deep learning are some things that are revolutionizing the way we see technology today. All right. So that is the implementation of machine learning. But I mean, ठीक है, ये है क्या? Like machine learning तो computer science का topic नहीं था कि like, but इसमें तो मेरे को समझ नहीं आ रहा. How do I even, like, if this is something that's so fascinating, so is it something that is made for just computer science people? Is it so? Not at all. I mean, believe me, it was statistics. ठीक है, 1965 में एक group of computer engineers बैठे. They decided कि हाँ, statistics के algorithms को computer पे run करेंगे. So they came up with a term called machine learning. ठीक है, machine learning को और broaden कर दिया. I mean, that's just for the reference of a joke. That's not exactly how it happened. But yeah, I mean, machine learning, artificial intelligence, these are very wide terms जिनकी कंप्यूटर से रिलेशंस हैं भी और नहीं भी है, but the roots are actually statistics and mathematics. Okay, so it's not like it's a field that can be pursued only by people who are into computer science. We have terms like auto ML, no code ML, no code artificial intelligence, in which like
everyone can use machine learning tools to their help. Because it's just to every sector of jobs, right? Now, like अभी पिछली कुछ slides में बहुत ज़्यादा confusion create हो गया कि यार कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देता है बंदा, कभी मशीन लर्निंग बोल देता है, कभी डीप लर्निंग बोल देता है। इसका सीन क्या है? ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बोलता है और कोई मशीन लर्निंग बोलता है, तो क्या वो अलग चीजें हैं या फिर सेम चीजें हैं? ठीक है, तो ये जो तुम इधर ये पाई चार्ट देख रहे हो ना, लाइक ये लिटरली दिस इज लिटरली समथिंग दैट यू विल सी एवरीवेयर। ठीक है, जो भी तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा या फिर मशीन लर्निंग पढ़ाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सेक्रेट और इतना ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिगर सर्कल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज एनीथिंग दैट कैन सेंस, रीजन, एक्ट एंड अडैप्ट। ठीक है, इट्स अ ब्रॉडर टर्म जिसमें लाइक कुछ भी, जो भी चीजों को ऑटोमेट कर पा रहे हो, जिसमें आप थोड़ी सी भी थिंकिंग कैपेबिलिटीज दे पा रहे हो, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग उसका एक सबसेट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है। ठीक है, देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ एल्गोरिदम्स जिनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और उनको when they when they are coming into use, they collectively are called as मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जैसे मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मशीन लर्निंग का फर्दर एक सब पार्ट है डीप लर्निंग। वो एक फर्दर एक लाइक उसमें सारे के सारे लाइक मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आ जाता है, देयर कम्स कंप्यूटर साइंस, देयर कम्स स्टैटिस्टिक्स, देयर कम्स मैथमेटिक्स। ये सब कुछ आ जाता है आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के अंडर। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी किसी चीज को ऑटोमेट कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन कॉल दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग में व्हाट हैपेंस इज वी गिव देम अ फ्यू वेरिएबल्स की तुम्हें सिर्फ मैं कहूंगा कि लाइक आज का मेरे को टेम्परेचर डिटेक्ट करना है, तो मैं तुम्हें कल का टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज धूप कैसी है, एंड बताओ मेरे को कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, डीप लर्निंग में हम वो भी नहीं देते। डीप लर्निंग में कह दिया कि बस बता मेरे को आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, सारा कुछ तेरे को खुद करना पड़ेगा। तो ऑल्दो इंटरचेंजिंग व्हाट यू वांट टू इज कि चीजें बहुत अलग हैं अपने अपने तरीकों में, बट इन द एंड दे ऑल आर अ सब पार्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। ठीक है, अब व्हाई डू यू नीड टू गेट इनटू एमएल, या फिर तुम्हारा क्या फायदा है एज अ स्टूडेंट डेवलपर या फिर एक सीएस स्टूडेंट के लिए कि एआई करना ही क्यों है तुमको? लाइक देयर आर लोड्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज, देयर इज ब्लॉकचेन, देयर इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, देयर इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, देयर इज वेब डेवलपमेंट, देयर इज ऐप डेवलपमेंट, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। व्हाई do you like with this slide, what I want to convince you is why you as a CS student or a student developer, be it from another like any field, why do you need to get into ML? ठीक है, number one, पैसा है भाई, very high paying jobs. Like I'll be giving you the present scenario. AI stands on like first and second index and Stack Overflow के survey के according, AI has been continuously on the top two positions जो like आज के दिन पे highest demanded skill है। ठीक है, देयर इज एन एक्सट्रीमली हाई डिमांड फॉर एमएल प्रैक्टिशनर्स इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस की इसकी एप्लीकेशन ही हर जगह पर है। ठीक है, जहां मर्जी देख लो। अभी आई टेल यू अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, दिस इज माय पर्सनल बिलीव दैट एआई इज समथिंग दैट विल पावर द फ्यूचर इन लाइक in the coming years, and I'm not talking about a future that is like 10 to 30 years later. I'm talking about like within 2 to 3 years, AI is the thing that will power the technological advancements in the world in the coming years. ठीक है, with ML, AI and deep learning, you can do what was impossible before. ठीक है, आज के दिन पे लाइक डू यू नो लाइक ऐसे लाइक इंडिया में वी हैव दिस वेरी एलीट ब्रांच ऑफ बैंक्स कॉल्ड एसबीआई, जहां पर हमारा काम कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई a lot of the works in like banks gets delayed is because वहां पर काफी ज्यादा मैनुअल प्रोसेसिंग होती है। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे मैनुअल लेबर या फिर कई जगहों पर computers and everything was slowing down the processes, yeah, for making tasks those were impossible before. With machine learning, computer science, AI, one is we've automated those tasks. We've made predictions easier. We've done things like आज के दिन पे you can predict कहाँ पर calamity आने वाली है. We can predict like the hunger strike. We could predict कि यहाँ पर wars. That is the level of artificial intelligence we are doing what was impossible before. And
obviously the competition is obviously people who are practicing ML, and the like no matter how many people start pursuing ML, आज के दिन पे पूरा का पूरा पंजाब भी ये start करना शुरू हो जाए ना ML पूरा का पूरा लगाकर, तब भी इसमें इतनी ज्यादा डिमांड है कि वो quench नहीं होने वाली. ठीक है, तो that's how like the vast this field of artificial intelligence is. So that is me trying to tell you, come over to the dark side, Darth Vader voice, Star Wars theme. तो अब ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार AI की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, कहाँ पर है, लाइक जस्ट टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू. ठीक है, फाइनेंशियल एक एग्जांपल दिया तुमको, उसके अलावा ट्रेडिंग होती है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स का नाम सुना होगा ना, आजकल तो सारे के सारे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. सो वी हैव स्टॉक्स लाइक जिनके प्राइजेस वी कैन प्रेडिक्ट टुडे यूजिंग एमएल एंड डीप लर्निंग, एंड इट्स नॉट लाइक कि जो चीज नहीं हो रही है, दिस इज सो पॉपुलर आज के दिन पे. देयर आर सॉफ्टवेयर जो कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यूज कर रही है टू प्रेडिक्ट द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स. ठीक है, we are using AI in businesses. ठीक है, you today can analyze what kind of a market need that suits you. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा की दुकान है, ठीक है, और उनको अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट करना है. एक तरीका क्या है, वो पैसे खर्चेंगे, वो पैम्फलेट्स लेंगे और सब जगह बंटवा देंगे. ठीक है, अब कुछ लोग उसको फाड़ के फेंक देंगे, कुछ लोग उसको बुकमार्क बना देंगे, कुछ लोग उससे एयरप्लेन बना के उड़ाएंगे. ठीक है, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि जिनके लिए वो चीज एक्चुअली रेलेवेंट होगी और जो कि एक्चुअली उसको पढ़ेंगे. तो व्हाट ML and AI helps in businesses कि वो उसी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को हमारा हेल्प करे. Particular sector is revolutionized. Anshika, Pranjal, you want to present something? Pranjal, Yes, Arpit. it will be great Hello. if you can Yeah. turn your video off. तेरी voice cut हो रही है due to the internet Uh, connection. uh, okay. Okay. All right. All right. You guys can see my screen, right? हाँ जी. Yes, sir. Guys. Yes, sir. All right. Just give me a moment. There's some internet connectivity issue. Yeah. So, like, yeah, we were talking about application of AI in medical sector. Um, Presently, like, to give you a very present state scenario, uh, uh, cancer detection today is done entirely using ML. Okay, early prognosis of cancer, tuberculosis, and a lot of other medical problems, which used to use highly invasive techniques, which used to involve very painful and very complex medical implementology, are using AI and ML to do that effortlessly. Guys, can you please? Jogesh, can you mute yourself? I'm muted, Suresh, on my end. Yep. So, anyways, so there's this application in medical field. There's this like similarly we have its application in computation and security. Just all of this is just to let you know that AI is presently everywhere. और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, that's how fast this field is growing. ठीक है, a lot of people keep on asking me, why is it that you never stop talking about machine learning? Bro, it defines who I am. And I would like that a lot of other people, a lot of people who are starting up with computer science take on with ML as well. ठीक है, now what makes up machine learning? ठीक है, अभी काफी लोगों ने जिन्होंने नाम सुना है ना, ठीक है, वो लोग सोचते होंगे हमें क्या करना है. That's just as a reference of ML not making love, it's machine learning. ठीक है, तो when we talk about ML, जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, गुड, लाइक कि दे कैन स्टार्ट, बट कुछ लोगों को कुछ आइडिया होता है एंड लाइक उन्होंने मूवीज देखी और उन्हें लगता है कि यार हाँ ऐसे आएगा, एक एल्गोरिथम लिखूंगा मैं एंड वो सारा का सारा काम करने लग जाएगा. दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस, बिलीव मी. आई एम लाइक अपना दर्द बता, ठीक है, लाइक ML Sir, is your not voice is just this very part, choppy. it's a whole of this.
My voice is choppy. All right, just give me a moment. I'll like change my internet connection. Can you guys hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Alright, I'm really sorry. I'm actually in my hostel, and well, believe me, hostel internet sucks. So I'm sorry. Yeah. So Huh. So what I was talking about is ki, yes, machine learning is not just about creating and like creating algorithms or using algorithms. Okay? There is a whole load of other processes that are involved. Okay? There is data pre-processing. Like, I mean, you get data, you have to clean that data. You have to go through loads and loads of entries of data. You have to train that data on a machine learning algorithm. And then you have to change the algorithms as well. But believe me, this is an extremely interesting task to do. Okay? I love doing this work, and believe me, people, especially who are into very logical kind of like people with a logical mind, or people who love who love solving puzzles and challenges, would totally fall in love with this particular field. Okay, so दैट इज व्हाट एमएल इज ठीक है अब एमएल के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है ठीक है एंड व्हाई आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दिस इज बिकॉज ये सभी प्रोसेसेस जरूरी हैं ठीक है दुनिया में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो कि बहुत गंदा काटेंगे तुम्हारा बाय सेइंग कि तुम बस इतना पार्ट पढ़ लो तुम्हें सिर्फ उतना पार्ट नहीं पढ़ना है यू हैव टू लर्न वट एवर अभी मैं बताने वाला हूँ वो सारी की सारे प्रोसेसेस तुम्हें करने हैं एंड देन यू विल बी एबल टू प्रॉपरली गेट इनटू एमएल then you'll be able to properly get the feel of what actual ML is. Okay, ठीक है you have to learn to understand the data set. You have to learn to know what a data set is. You have to learn कि data set दिख कैसे रहा है और उससे मैं क्या क्या information ले सकता हूँ ये intuition अपने आप grow कर जाएगी but just letting you know कि you have to learn how to understand the data set. You have to learn data pre-processing. You have to learn the ML algorithms. You have to learn how to train and test those models, and obviously you have to learn how to tinker those models. ठीक है all five of these processes are extremely crucial in the life of a ML practitioner, and hence everyone should know that all these processes are something that you should know. ठीक है चलो like अभी काफी सारा मैंने वो कर दिया let's just go for a quiz ठीक है एक छोटी सी quiz करते हैं participants can just scan this particular QR code guys can you please also float the link uh, this particular link let me just do that wait Sure, sir. there you go. Sir, you haven't activated the quiz. Sorry. It shows the quiz is not open. So. Yeah, I'll do that now. It's okay. Is it now? Like, is it showing Sir, now? where is the link? I've shared that in the chat box. Sir, chat box is not available. Only available to the team members. Okay, so what you can do is like scan this QR code. I'll just show my screen again. Wait a second. I'll drop the quiz link in the YouTube chat. You can access it from there, guys. No, like, I mean that is something, but sorry. Sir, could you also put the link on the Discord? Sure. Arpit, can you please share the link on Discord server? We'll be doing that. Let me just do that on my end. Wait. Yeah, I'll be doing it. Just do it on your end, please. Sir, it's showing that the presentation is no more active. It's okay. I'll activate it now, but like just waiting for you all to join. 26 people have joined till now. You can refresh it. Pranjal sir, can you just show the Menti code so that people who are there in the teams? I mean, you can also just go to menti.com and use this particular code for the on Discord में link share हो चुका है. Everyone can join it from there. Yeah. Excuse me. Yes, go ahead. Actually, in my phone, it's only showing the screen only. Sorry. Actually, I have started the quiz in my phone, and it's showing
thing. Like it's showing It all of learn student. Is that yeah, just give a moment. I'll be starting the quiz live here only. You can just okay? wait for a moment. Okay, no problem. Thank you so much. We have 50 participants who've joined. We'll start in another 1 or 2 minutes, I guess. Sorry to interrupt, Pranjal sir, but there was a question in YouTube comment section. Sure, just tell me. That is YOLO V3 good for making programs? Absolutely, YOLO V3 is one of the most intricate piece of image detection open source projects that we have today, and it's amazing for image detection projects. It's great. It's a great one. I hope the answer is clear. Thank you. Yeah, I mean, I'm actually not looking at the YouTube live stream right now, so it would be great if like कोई भी questions उधर आते हैं तो please just let me know here only. Yes, we will let you know. Thanks a lot. Cool. So shall we get on with it? Let's start. अगर किसी ने अभी join नहीं किया तो एक बार मेरे को बता दो, नहीं तो let's just start with it. Okay. Cool. I'll just start. So we have a lot of people. Okay. एक क्वेश्चन इसमें है जो कि मैंने अभी तक नहीं करा है एंड आई वांट यू ऑल टू फटाफट से जस्ट अगर गूगल कर पाओगे उतने में तो ठीक है, नहीं तो अपने दिमाग का मशीन लर्निंग मॉडल यूज करना और कोई भी तुक्का मार देना, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन तुमको आते होंगे होपफुली एंड अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। Okay, we have a lot of answers coming in. That's nice. That's nice. Time's about to get over. And that's nice. That's nice. Nice. For the people who have answered, it's mutually exclusive. No, like deep learning and machine learning in the end are the subsets of AI only. वो diagram दिखाया था ना, वो गोल गोल वाला, तो that. Next question coming up in. So we have Navya on the top. That's amazing. And we have fans of Naruto, Sakura, bro, anime rocks, and Ayush till now. That's amazing. So let's start with the next question. Just a moment. I mean, that got messed up, but well, it's okay. Just give me a moment, please. Guys, is there a problem with my internet connection? Is there like, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Just a moment. I messed up, I guess, on my end. Yes, so the questions are getting skipped. Yeah. Rahul, could you just please mute yourself? Guys, I actually recommend you to stay muted in case of no doubts. Sir, the quiz actually didn't work. Yeah, just when, give me. when you do the next question, it doesn't appear on my phone screen. Okay, just give me a moment. I answered both questions, but it said that I didn't answer in time, despite having registered my answer. Yes, sir. It doesn't, take my response. Check now if question 2 is available. It doesn't. Yes. Guys, the quiz has started. So you can start Again, answering. just check if that's available right now. Yes, sir. The second question just came out.
Yeah, you can just answer it now. Go ahead. That's the right answer. Yeah, तुम लोगों ने आंसर देख लिया था ना? Okay, but it's fine, I guess. Okay. So who do we have on top right now? Navya and So your Sakura. screen is not being shared. It's okay, like leaderboard का ही है वो मैं देख लेता हूँ. मैं screen share कर देता हूँ. हाँ, अभी screen आ रहा होगा. So we have Sakura and Navya. ठीक है, a tough competition between the two and Kunal just behind them. The other question coming up now. Now this is the question I want you all to just Google या फिर like just तुक्का मार लो जो भी. That's nice. All right. So just to let you know, ReLU is something that will be taught to you in deep learning, and it's an activation function. I just like put this question in to know if any particular people actually know the answer, but like ये 1/3 की probability सही चल गई यार काफी. That's nice. The next question now. Okay, that's nice. So the question just got skipped this time. Yeah, This I don't screen know why. came on. I really don't know why that's happening. I'll reset it Don't share again. the screen. Maybe there's an internet connection problem. Could be that. Could be that. Just a moment. Uh, Guys, just see if the other question is visible now. Okay. Yes, sir. Yes, sir. It is. I'm assuming most of you will answer this one correctly. Damn, bro. Anubhav and Zakir Khan, guys, what the hell? I mean, please don't disappoint. But yes, Abhishek It is Upmanyu actually a is legendary meme, so it's a very legendary. exactly, exactly. This one's a Excuse me, sir. legendary. Yeah, Sir, we cannot see your screen. I haven't really shared it because I'm actually facing some issues with this Menti quiz or वो answer दिख जा रहे थे. तो but like just to let you all know, Navya, Sakura and Assis are presently on the top. Like question तो तुम्हारे screen पर आ रहा है ना, right? Yes, sir. हाँ तो cool. Just leaderboard का ही है. Leaderboard में Navya, Sakura and Assis are like presently on the top. Starting with the final question, guys, I really want you all to think about this and then answer. Okay, ध्यान से and just answer it now. Please don't kill me for this question, okay? I had to do this. Pranjal, you have to screen share. We're gonna upload it on YouTube. People need to see questions. That is that. We'll just wait. All three of the questions are correct. तीनों चीजें धोखा है, ठीक है? कॉलेज में कोई ऐश नहीं है. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कोई 100% accuracy नहीं है. And well, obviously we know correct धोखा है. तो ठीक है. Thanks a lot for joining in for this quiz. ठीक है. Navya, Sakura and Assis, guys, can you just unmute and just let नहीं. Okay, Assis का score कम हो गया है and we have new people on the top. Navya, Sakura and Akshat, guys, can you please unmute and let us know about your details? क्या तुम लोग थापर में हो तो so that we can like get you all the goodies Yes, that sir. you I am want. in Thapar. My name is Akshat. Okay, Arpit, please note कर लेना. Guys, you can just
mail हाँ us at msc@thapa.edu. Your mail ID is your details so that we can reach out to you. So can you yeah repeat the email ID? MS msc@thapa.edu. all right. Hello. Hello. There's Yes, internet problem. Can you repeat that Gmail? it's MSc, like MS. as in Microsoft. Huh. Let me just type it out. We'll also be dropping it in the YouTube chat. All right. So, I mean, shall we get on to the next part of the presentation? What I want from you all is to like ask any doubts if you have presently, like any doubts that you have, just feel free to ask them now. Otherwise, we'll just get on to the next part of this presentation. Any doubts, guys? Also, team, like, are there any particular doubts on like the YouTube? No, Not sir. yet, sir. All Sir, right. can you little bit about ReLU? RELU. ReLU function. It's okay. So activation functions are a very fascinating kind of a like what do I tell you? Okay. So what ReLU does is wait a second. I'll just share a PPT with you all. Okay. ताकि तुम्हें better समझ आ जाए. Just give me a moment. Can you guys see my screen right now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Cool. little bit. So I mean when you get a data ना ठीक है जैसे अभी like data हम सुनते हैं ना कि यार पता नहीं क्या ही होगा जैसे नाम एज ऐसे कुछ होगा ठीक है तो डेटा उस फॉर्म में यूजली नहीं होता ठीक है डेटा इज a huge set of numbers and what we do with that data is we plot that data okay we plot that data and we get a mess like this that you have on the screen presently can you see this particular graph right now ठीक है तुम देख सकते हो ना कितना मेसी सा ग्राफ है और मतलब कुछ समझ आ नहीं रहा है ये तो हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है रेड और ग्रीन के अंदर ठीक है एंड दैट इज समथिंग दैट हैज बीन डन यूजिंग अ डीप लर्निंग एल्गोरिदम ओनली ठीक है तो बट हाउ डज अ डीप लर्निंग एल्गोरिदम या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक्चुअली डज दिस ठीक है तो ये सारा का सारा काम ना एक एक्टिवेशन फंक्शन का होता है जो कि हमें अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स देता है ठीक है अगर मान लो मेरे को आंसर येस और नो में चाहिए कि फॉर एग्जांपल मेरा सर दर्द हो रहा है शुड आई टेक दिस लाइक शुड आई टेक क्रोसिन और शुड आई टेक एस्पिरिन तो इसमें आंसर मुझे येस और नो में चाहिए तो दैट इज व्हाट माय एक्टिवेशन फंक्शन विल डिसाइड या फिर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर विजन या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे फोन में फेस डिटेक्शन है वो मेरा फेस देख रहा है अब उस केस में मेरे फोन को उसने ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बंदा जो है ये प्रांजलि है फोन के अंदर देख रहा है तो उस केस में मुझे येस और नो में आंसर नहीं चाहिए उसमें मेरे को प्रोबेबिलिटीज में आंसर चाहिए कि देयर इज अ 95% चांस दैट द पर्सन लुकिंग एट द फोन राइट नाउ इज एक्चुअली प्रांजल तो समझ रहे हो कि कहाँ कभी कभी हमें येस नो में आंसर चाहिए होते हैं कभी कभी हमें प्रोबेबिलिटीज में आंसर चाहिए होते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स दैट वी माइट नीड आवर आंसर इन तो रेलू या फिर इन सभी एक्टिवेशन लाइक लीकी चलो चलो लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट बट एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है टू गिव अस द आंसर इन आवर रिक्वायर्ड फॉर्मेट ठीक है तो दैट इज द पर्पस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन और रेलू इज दैट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन ओनली ठीक है तो there's that let me like is that doubt particularly cleared like जिसने भी पूछा था वो like I mean I've been telling you that very superficially but I mean just to give a gist of what that particular thing is so that is what an activation function is and relu is a kind of an activation function only ठीक है uh, whoever asked the doubt can you just please say yes or no like मेरे को पता चल जाए कि तुम्हारा clear हो Yes, गया sir. doubt वो cool Thank you, cool sir. इसके अलावा इट्स ओके किसी और को कोई भी डाउट है अभी लाइक जस्ट यू कैन गो अहेड एंड आस्क इट ओके सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट ठीक है अगर लाइक ये पीपीटी मैं तुमको दे दूंगा देयर इज दिस रीजन दैट लाइक आई वाज रिलक्टेंट ऑन नॉट शोइंग यू व्हाट अ मशीन लर्निंग मॉडल का कोड लुक्स लाइक ठीक है क्योंकि आई डोंट वांट टू स्केयर यू ऑफ यू आर जस्ट
like अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ एंड एवरीथिंग कैन गेट वेरी ओवरवेलमिंग फॉर नाउ, बट स्टिल जिनको कुछ भी इंटरेस्ट होगा ये पीपीटी का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, फील फ्री टू स्कैन दिस, एंड उसमें मेरे 2-3 कोड्स पड़े हुए हैं, तो यू कैन जस्ट चेक दोज आउट एंड गेट टू नो कि कैसा होता है और कैसा नहीं होता। ठीक है, तो लाइक मशीन लर्निंग मॉडल की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब वे टॉकिंग अबाउट कि मैं इतनी सारी चीजों की बात करी कि मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ यहाँ यूज होता है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग के साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि लाइक उस मॉडल को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आपको एक ही चीज लाइक हमें बार बार चीजों को ट्रेन करना पड़ता है, हमें बार बार कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, हजारों चीजें होती हैं। जैसे मैं चलो तुम्हें एक एग्जांपल दूं भी एक मशीन लर्निंग के कोड का, तो let me just share a screen again. Just give me a moment. So you haven't given permission to access this file actually. I will give you that. I will give you that after this particular session. I haven't given it right now क्योंकि मुझे पता था तुम लोग सारे उधर पहुंच जाओगे, so इसलिए मैंने नहीं दिया था। मैं अभी इस सेशन के बाद दूंगा उसका एक्सेस। Just give me a moment. मेरे पास Okay, start sir. है। ये मेरा गूगल का लैब लोड हो रहा है, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बहुत बेसिक सा कोड दिखाता हूँ मैं तुमको एंड उसकी हल्की सी वर्किंग भी बता दूंगा इफ यू वांट। ओके, जस्ट गिव इट अ मोमेंट। अगेन था पर का इंटरनेट या, तो जस्ट ऊपर से नीचे की हल्का सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं 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 जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर कोड जिसमें आई हैवंट यूज्ड अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, और जिनमें ये इतने बड़े बड़े जो फंक्शंस है ना, ये मैंने खुद लिखे हुए फंक्शंस है। ओके, ठीक है, यू डोंट नीड टू डू दैट राइट नाउ। ठीक है, अब इनकी जरूरत नहीं है, इतने इतने लंबे लंबे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है हम लोग को, क्योंकि हमारे पास ये चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड आने लग गई हैं। अब आई विल टेल यू व्हाई। लाइक अगर अब तुम जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ोगे, तुम्हें लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन फर्स्ट ईयर, तुम लोग को सी पढ़ाई जा रही है, उसमें देयर विल कम अ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं फंक्शंस। एंड व्हाई डू वी मेक फंक्शंस? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है। ठीक है, जैसे एक चीज है कि ये एक फंक्शन है जो मुझे पता है मेरे को बार बार यूज होना है, तो मैंने इसका एक फंक्शन बना दिया एंड आई कॉल इट अगेन एंड अगेन, ताकि इस कोड को मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आई मेक अ फंक्शन। ठीक है, अब मशीन लर्निंग की पूरी फील्ड में ऐसे काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि पता है हर मशीन लर्निंग इंजीनियर ने यूज करना है। तो उन्होंने क्या किया, इन फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बना दी। ठीक है, तुम ये वाला कोड देख रहे हो कितना लंबा है, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, राइट? एंड ये वाला कोड देखो, खत्म, बस इतना। And how I'm able to like do that is because I'm using libraries in this and I'm not using libraries in this. इसमें जितने सारे functions है, इतनी सारी maths जो मैंने calculate करी हुई है, continuously print करा रहा हूँ, सारा का सारा calculate कर रहा हूँ, वो इसमें already pre-made function है जो कि एक किसी coder ने already code करके रखे हुए हैं। मैं बस उन्हें import करता हूँ और use कर लेता हूँ, तो perfection हो गया ना। लाइक मेरे को जरूरत ही नहीं है वो करने की। तो libraries are a very essential part of machine learning, and as a person who wants to get into machine learning, it's very important for you all. And in fact तुम्हारी जितनी भी machine learning होगी भी, वो सारी की सारी libraries की help से ही होगी। ठीक है, तो आज के दिन पे एक बंदा बोलेगा कि सर मुझे और कुछ करना ही क्यों है, लाइक व्हाई डोंट आई जस्ट स्टडी लाइब्रेरीज। मेरे को पीछे की ये जो लोग अभी मैं भी बोलूंगा आगे कि मैथ्स करनी है, तो लाइब्रेरीज करूँ क्यों मैं? ठीक है, आई टॉक्ड अबाउट दिस प्रोसेस कॉल्ड टिंकरिंग द मॉडल। यहाँ पर मैं टिंकरिंग द मॉडल की बात कर रहा था। ठीक है, ये जो टिंकरिंग द मॉडल है ना, ये लाइब्रेरीज अचीव नहीं कर पाती। ये सारी चीजें लाइब्रेरीज कर सकती हैं। डेटा सेट भी समझा देंगे तुमको, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कर देंगी, एमएल एल्गोरिथम्स भी पड़े होते हैं, ट्रेनिंग टेस्टिंग भी करा देंगी। ये जो आखिरी पार्ट होता है ना, जो आपकी एक्यूरेसी को 60% से 92%, 93% पे लेके जाएगा, इतने काम ये जो चीज है ये लाइब्रेरी नहीं कर सकती। लाइब्रेरीज आर लिटरली आर द अल्ट्रॉन ऑफ एआई वर्ल्ड। लाइक दैट्स लाइक लाइब्रेरीज का लाइब्रेरीज वर मेड ताकि एक एमएल इंजीनियर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब व्हाई वुड यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील, राइट? ठीक है, अगर एक चीज हो चुकी है तो व्हाई नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे यूज दैट। एंड इसलिए लाइब्रेरीज बनी थी। पर आज के दिन पे जितने भी पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इनटू मशीन लर्निंग, दे जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग द मैथ दैट्स एक्चुअली बिहाइंड ऑल ऑफ दैट। मशीन लर्निंग में बहुत मैथ्स है।
ठीक है, तो लोग मैथ्स इग्नोर कर देते हैं, लाइब्रेरीज बना लेते हैं, लाइब्रेरीज उठा लेते हैं, लाइब्रेरीज की ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख देख के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं एंड दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ठीक है, दैट्स नॉट मशीन लर्निंग। मैं वही कह रहा हूँ, दी डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु यूजेस लाइब्रेरीज एंड जिसको मैथ्स और जिसको मैथ्स नहीं पता एंड अ पर्सन हु नोज मैथ्स इज कि 60% और 92% की एक्यूरेसी, दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। तो इसीलिए this is just to let you all know कि a lot of people will try and trick you and to tell you कि बस libraries कर लो and mathematics का इतना कुछ नहीं है, mathematics इतना important नहीं है। तो this is just to let you all know कि libraries करनी है, libraries बहुत जरूरी है, libraries के बिना काम नहीं चलेगा, but उसके maths पीछे का करना उतना ही ज्यादा important है। ठीक है, अब let's talk about the role of mathematics कि अब इतना इसने मैथ्स बोल दिया तो सीन क्या है भाई, मैथ्स में है क्या सीन। ठीक है, तो मैथ्स का सीन इस मीम से बेटर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, इस आइसबर्ग का टिप इज व्हाट एआई इज, उसका बचा हुआ पार्ट इज डीप लर्निंग, और उसको सपोर्ट जो कर रखा है ना नीचे एलियन चीज ने, ठीक है, दैट्स मैथ्स एंड पाइथन, दैट्स होल्डिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर। ओके, सो नेवर इग्नोर मैथमेटिक्स। Phoebe's word of advice: read the maths behind ML. Do not just learn the libraries and get on with it. Okay, for God's sake, don't ignore mathematics. ML कर लेना। ठीक है, अब ML के साथ कई लोगों ने एक और फील्ड सुनी होगी जिसको कहते हैं डेटा साइंस, विच अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इट्स अ वेरी हाइप्ड अप फील्ड एज वेल। लाइक उसकी भी जितनी अपॉर्चुनिटीज मशीन लर्निंग की है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपकी डेटा साइंस में भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, वो पाई चार्ट याद है वो जिसमें लाइक एआई इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग लाइक ऐसे डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ artificial intelligence। ठीक है, डेटा साइंस इज समथिंग दैट इंटरसेक्ट्स ऑल ऑफ दैट, पर इनके बीच में भी नहीं पड़ता एग्जैक्टली exactly, ठीक है, इनका सबसेट नहीं है, इट्स एन इंटरसेक्शन बिटवीन, लाइक इट इज एन इंटरसेक्शन जो कि तीनों को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट डेटा साइंस इज। एमएल एआई और उसमें बहुत मैथ्स है। ठीक है, और लाइब्रेरीज का यूज कम है, और क्या कहते हैं डेटा साइंस में लाइब्रेरीज और वो ज्यादा आ जाती है। लाइक डेटा साइंस इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद डेटा, जो शुरुआत के कुछ स्टेप्स थे उसके, जो इस प्रोसेस में ना ये वाले की अंडरस्टैंडिंग द डेटा सेट, डेटा प्री प्रोसेसिंग और एमएल एल्गोरिथम्स का थोड़ा सा पार्ट, ये सारा का सारा आपका डेटा साइंस में आता है। और ये बाद वाला जितना पार्ट आता है ये आपका एमएलई में आता है, दैट इज मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग या फिर डीप लर्निंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये वाला पार्ट इज एमएल, ये वाला पार्ट जो है पहले तीन पार्ट ये हैं वो आता है आपके डाटा साइंस में। एंड बिलीव मी बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर वेरी इंटरेस्टेड एंड इनमें से कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ठीक है, सो आई वुड लाइक यू ऑल टू एक्सप्लोर दीज पर्टिकुलर फील्ड्स एज वेल एज अ वेरी लाइक कॉमन पीस ऑफ एडवाइस, जो कि लाइक मेरे जूनियर्स भी मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं डेटा साइंस करूँ या फिर मशीन लर्निंग करूँ। इट वाज अनदर डे, अभी एक दो दिन पहले की बात है, एक जूनियर का मेरे पास टेक्स्ट आया हुआ था कि भैया यार मैं हूँ तो वैसे डेवलपमेंट के अंदर, मेरे को एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाने, तो मैं क्या करूँ, एमएल करूँ या डेटा साइंस करूँ। तो for the people who are into development and who want to incorporate machine learning into their development models, तो उनको data science करना चाहिए। and the people who actually want to get into machine learning, who actually want to delve deep into the field, उनको machine learning pursue करनी चाहिए। and both of these are very interesting fields in their own। ठीक है, अब एक और चीज जो कि like this is something not a lot of people will tell you, ठीक है, but this is very important। ठीक है, एंड दैट इज वही जैसे मैं तुम लोग को बता रहा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइक machine learning is for everyone, it's not limited to computer science students only। ठीक है, and that has been made possible by cloud services like Azure, that has been made possible by cloud services like AWS and GCP as well। ठीक है, what they allow is like मशीन लर्निंग में आपके बहुत रिसोर्सेज लगते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, लाइक आई नो वन टाइम आई वाज ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन माय सिस्टम एंड मेरे सिस्टम में से लिटरली स्मोक उठ गई थी और मेरी फट गई थी बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो I mean, when you are doing heavy tasks, my machine might not be capable of doing that, even though like I have 1050 graphic cards on my device and it's a fairly decent compute power। ठीक है, बट स्टिल मेरा मशीन कई बार हैंडल नहीं कर पाती, तो दैट इज वेयर क्लाउड जंप्स इन एंड Azure एंड मशीन लर्निंग। आई एम पर्टिकुलरली मेंशनिंग Azure क्योंकि दिस इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेटली बेस्ड क्लाउड सिस्टम जो कि एमएल इंजीनियर्स को और डेटा साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा सूट करता है। तो दिस इज समथिंग यू शुड ऑल्सो लाइक एक्सप्लोर। ठीक है, वंस यू आर विद एमएल या फिर एमएल कर लिया तो लाइक नो कोड ऑटो एमएल ये सब चीजें भी तुम्हें डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, हाँ,
अब ये सब बात कर ली, एमएल क्या होती है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, या फिर कोई ट्यूटोरियल दे दो भैया, या फिर कैसे करना है, मेरे को सीखना Excuse कैसे me. है। Sorry to interrupt, sir. हाँ, गो हेड। Pranjal, sir. So हेलो there हेलो, was कैन raised hand by Akshat, I guess. लेट मी सी। अक्षत ने हैंड रेज किया था, I guess. उससे पूछ रहा अक्षत 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 गर्ग, अक्षत गर्ग, राइट। लेट मी जस्ट अक्षत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Sir, I was just asking, is Azure just like doing hashing algorithms for Bitcoin or Ethereum and something like that? Sorry, can you just repeat what you're saying? Like, आपकी आवाज Yeah, थोड़ी सी कट I'm रही थी। asking if is Azure is just like doing hashing algorithms for Bitcoin or Ethereum or like cryptocurrency in general. Like, can No, you no? no, Like you actually no, said, no, cloud no, no. computing. You हाँ हाँ। said cloud. Yeah. So is it just like that or is it different? I'll tell you, like, I mean, cloud is one thing, ठीक है, cloud is one thing, and doing ML on that and using those cloud compute powers to hash and mine bitcoins and cryptocurrency, these are made available using cloud services, ठीक है, like you can mine cryptocurrencies on using cloud services as well, although that's not recommended क्योंकि cloud services बहुत ज़्यादा resources लेती है और वो बहुत costly पड़ जाता है आपको in the end. But I mean, yes, you can mine, like cloud is nothing but a very strong computer that you can access remotely. That is what a cloud is, ठीक है, and उसी like उसी कंप्यूटर पे जिसकी बहुत ज्यादा एक कंप्यूट पावर है, उसके ऊपर तुम अपनी एमएल की प्रोसेसिंग डाल सकते हो, उसी के ऊपर चाहे अगर तुम्हें माइनिंग करनी है क्रिप्टो करेंसी की तो आप वो भी यूज कर सकते हो, तो दैट्स व्हाट क्लाउड इज। उन्हीं की सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे अज्योर का जो ऑटो एमएल या फिर नो कोड एमएल है, तो वो अज्योर की एक सर्विस है जो कि एमएल इंजीनियर्स को बहुत सूट करती है, तो इसलिए मैं इन पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस कर रहा था। आई एम श्योर कोई ना कोई सर्विस क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी बनाई हुई होगी उन्होंने। एडब्ल्यूएस में तो है डेफिनेटली, एडब्ल्यूएस में सेज मेकर इज फॉर मशीन लर्निंग, उसका मैं कंफर्म नहीं है, बट हाँ देयर इज वन सर्विस दैट कैन बी यूज्ड टू लाइक माइन क्रिप्टो करेंसी एज वेल। अक्षय, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन या फिर तुम कुछ और पूछ रहे थे? लाइक आई हैव अ फीलिंग कि You शायद say तुम it's कुछ और okay. I पूछना got चाहो। it. I got it. Yeah. You got it? Alright, alright, alright. I mean, like in case मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर गया हूँ तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी, इट्स नॉट लाइक, ठीक है ना, जस्ट गो अहेड एंड कैन जस्ट टॉक व्हाटएवर इट इज, कूल। तो लाइक और किसी को कोई डाउट है अभी? गाइस फील फ्री टू unmute yourself and Sir, could I ask. know a bit more about the hello, sir? हाँ, yeah, I can hear you. Yes, sir. Could I That's know a bit more about the applications of machine learning in fields like cybersecurity, which is something sure. that a lot of students are interested in? Sure. I mean, cybersecurity, I'll tell you. I mean, a lot of attacks, like, a lot of attacks like DDoS and phishing attacks, they are actually very much identified and we have a very strong fail safe for them, right? ठीक है, आज के दिन पे we have a lot of services that are already there DDoS को prevent करने के लिए, we have load balance, I mean there are a lot of services जिनको आप use कर सकते हो काफी सारे attacks को use करने के लिए, but इसी वजह से लाइक सिंस अ लॉट ऑफ अटैक्स जो पुराने प्रीवियसली बहुत पॉपुलर जिनके हमने नाम सुने हुए उनके ऑलरेडी अटैक्स का सोल्यूशन हमारे पास है, तो like what today is happening is कि people find different kind of like security and like security issues and bugs in the software to exploit the particular system, ठीक है, and what machine learning and deep learning algorithms can do is first of all analyze the system to look for bugs themselves, that is act like attackers to look for some exploits in the system, that way those exploits can be looked into and they can be like fixed from the developers end, okay, that is one application. The other one is actually stopping the particular attacks from happening. A lot of the times situations gets worse because of the delayed response from the engineers, the software engineers that are handling those particular attacks. What machine learning algorithm, deep learning algorithms can do is provide an immediate solution या फिर एक immediate fail safe to those particular attacks, ठीक है, similarly transactional issues में like a lot of encryption today is being done using ML algorithms जो कि like which cannot be dehashed, ठीक है, तो there are n number of possibilities and like समझ रहे हो ना, जिन चीजों में आपको पहले एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, जिन चीजों को करने में आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट रहती थी, वो सारी की सारी चीजें आर लाइक बीइंग अप्रोच्ड फ्रॉम एन एमएल पर्सपेक्टिव, तो दैट वे कंप्यूटर नेटवर्क उसमें बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन रहती है,
ठीक है, लाइक बैंक फ्रॉड्स वगैरह मैं बताऊं, बट वो तो बहुत बेसिक सी वो हो गई, वो तो इतना हो जाता है कि लाइक हम लाइक एक बिगिनर प्रोजेक्ट कहते हैं कि लाइक क्रेडिट कार्ड फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम बताओ, वो इतना, इसलिए मैं उसको ऐसे सेलिब्रेट करके बता भी नहीं रहा हूँ देखो, बट दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ इट कि लाइक यू कैन जस्ट नॉर्मली बैंक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन और वो सब कुछ भी होता है, तो दैट्स समथिंग that's some application of ML in that particular field. Thank you So very much, sir. See, I was wondering this because, like, lots of universities have it like mutually exclusive. You can either pursue cybersecurity or you can pursue machine yeah, learning. So I want to know more true. about the applications within the other. Yeah, I mean that is true, but I guess like even though like a lot of electives in universities offer the courses in a very mutually exclusive manner, but I guess in the end all of these can be interrelated in like web development. Like a lot of people are offering web development as a separate elective, but well then again none of the two can exist without each other, right? There is no web development or application development without computer security and machine learning. So there's that, even though like it's just about making a niche and then pursuing something just to better that, just to supplement that particular niche. So it goes that it works that way. Okay, so Thank you that's very that. much, sir. Thank you very much. Any other questions? Cool. So let's just get on with it. Like एक basic सा road map prepare किया था ये, ठीक है, हम लोगों ने, एंड दिस इज समथिंग ताकि तुम्हें बता दें कि लाइक अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, वो मैं आगे और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये इसके लिंक्स वगैरह तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे, प्लस इट्स मोर विजुअल तो थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट, मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना है तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्री रिक्विजिट Sir, सबसे पहले, can you ठीक है। please float this link? मैं पीपीटी दे दूंगा, पीपीटी में सब है यार, देख पीपीटी में लिंक है, वहां पर क्लिक करना आ जाएगा, Okay, sir. ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. सो यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लर्निंग सबसे ज्यादा पॉपुलर 3 हम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। One is Python, obviously. Then there is R, and then there is MATLAB. Python for the modern day developers. हम लोग सारे के सारे usually Python यूज करते हैं। जितने भी आज के दिन पे ML के कोर्सेज वगैरह देखोगे वो सारे के सारे Python में ही होते हैं। तो एज अ बिगिनर, एज अ पर्सन, काफी लोगों ने, तुमने 11th 12th में भी Python करी होगी, तो Python इज समथिंग जो कि बहुत easy to comprehend है, and you all can just go with Python. MATLAB is the OG, like it's the original gangster of the machine learning वर्ल्ड। पहले की जितनी भी मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस होती थी वो सिर्फ मैटलैब पे ही होती थी एक्सक्लूसिवली, इसीलिए आज के दिन पे भी जितनी भी रिसर्चेस होती हैं और जितने भी पुराने प्रोफेसर जिनके अंडर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो यूजुअली मैटलैब पे करते हैं, बट पाइथन इज ऑब्वियसली द वे टू गो, या फिर फ्यूचर कह लो। आर इज फॉर द पीपल हु वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस, क्योंकि आर से डेटा मैनिपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स करना इज वेरी 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 सिंपल। तो ये तीनों लैंग्वेजेस हैं, तीनों में से कोई भी एक उठाओ और करना स्टार्ट हो जाओ। मैथ्स वाला पार्ट तुम सबको ऑलरेडी आता है, डरो मत अगर मैं कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलस में मैं तुमसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कराने वाला है यहाँ पर बैठा के, इट्स जस्ट दैट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक्सप्लेन करेगा ना सामने वाला बंदा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, तुम्हें ये भी लाइक तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए। तो ये मैथ्स वाला पार्ट यूजुअली एटलीस्ट इंडियन सिस्टम में, लाइक आई एम नॉट श्योर इफ पीपल आर जॉइनिंग इन, सिंस ये एमएलएससी का इवेंट है तो दे कुड बी पीपल हु आर जॉइनिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बट फॉर इंडियंस एटलीस्ट हमारा ये वाला मैथमेटिक्स वाला पार्ट सॉर्टेड होता है, अपना 12th में हमारा कवर्ड होता है, ठीक है। तो फिर मशीन लर्निंग के बेसिक्स करने हमने उसके बाद, ठीक है। वी नीड टू डू डेटा प्री प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बोला था, यू नीड टू डू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। 3 टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रिइंफोर्समेंट, सब कोर्सेज बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन, ये सारा का सारा चीजें करना है, ये दोनों चीजें अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। फॉर द पीपल who then again want to get into deep learning, जो कि एक स्टेप अहेड है, उनके लिए ये वाली चीजें हैं और उनको ये वाली चीज पढ़नी होगी, ठीक है। अब मशीन लर्निंग यहाँ पर खत्म नहीं होती, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। आपने एक बेसिक फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग कर लिया, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज सेलेक्ट योर नीश,
ठीक है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, वी हैव मशीन लर्निंग इन डेटा एनालिटिक्स, जो कि मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब कुछ करते हैं। तो गो इनटू दैट, एक्सप्लोर दैट। मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, रिकमेंडर सिस्टम्स, अ लॉट ऑफ दैट इज दैट्स ऑल ऑफ दैट इज मशीन लर्निंग ओनली। देयर इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, जो कि एक्चुअली डीप लर्निंग की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एंड लाइक आई एम प्रिटी श्योर तुमने इन दोनों की एप्लीकेशन देखी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तुम्हारे जितने भी ये वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं या फिर जारविस वगैरह, ये सारे के सारे एनएलपी बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर विजन इज गूगल लेंस देखा है, दैट्स कंप्यूटर विजन। टेस्ला देखा है, जो कार डिटेक्शन होती है, रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये सारा का सारा, ऑल ऑफ दैट इज कंप्यूटर विजन। तुम्हारे फोन के जो फेस लॉक्स हैं, वो सारा का सारा, एवरीथिंग इज कंप्यूटर विजन। तो सेलेक्ट योर niche. My personal recommendation would be to go into these two if you are into research and corporate research, या फिर MS करके PhD करनी है, and if you want to like get into the market as soon as you like are done with your studies, तो you can try looking at these, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज में इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इन दोनों कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज में रहती है, थोड़ी ज्यादा इस तरीके से होता है। तो दैट इज अ बेसिक रोड मैप ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि तुम कर सकते हो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आगे की स्लाइड्स में भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, अब लाइक हाउ टू गो अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीएल, मैं वही कह रहा हूँ कि यू डोंट नीड अ लॉट शुरुआत में। ठीक है, व्हाट यू नीड इज कि अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कर लो थोड़े से। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना सीख जाओ, पाइथन सीख जाओ, C++ सीख जाओ, कुछ भी सीख जाओ। एक बार C++ कर लोगे, पाइथन वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल। ठीक है, तो जस्ट डू दैट, एंड मैथमेटिक्स वाला क्राइटेरिया तुम्हारा ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, एंड ये वाली इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि मैंने लाइक मेंशन करे थे। इसका ये अगेन पीपीटी में तुमको दे दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उसमें तुम स्कैन कर लेना। और ये एक रिसोर्स शीट है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आई मीन आई हैव टू लुक फॉर इट, मुझे ड्राइव में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। बट लाइक जस्ट स्कैन दिस, एंड इसको मैं थोड़ा सा अरेंज भी कर दूंगा। दिस इज अ रिसोर्स शीट दैट यू कैन चेक। इसमें मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज और कोर्सेज वगैरह डाले हुए हैं, कुछ कुछ उसमें से कोर्सेज पेड भी हैं। तो बट like not that it means something या फिर कुछ भी, but I have an access to a lot of these courses। तो किसी को एक कोर्सेज कभी करने हो या फिर कुछ भी हो, तो फील फ्री टू आस्क मी फॉर दी पासवर्ड, मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूंगा, एंड तुम लोग एक्सप्लोर कर लेना अपने एंड पे, नो इश्यूज। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। ठीक है, लाइक आई वांट यू ऑल टू आस्क योर डाउट्स राइट नाउ। तो प्लीज लाइक यू ऑल कैन जस्ट अनम्यूट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो। लाइक आई नो इट्स अ वेरी, मैंने इसमें कोई कोड में नहीं किया, क्योंकि लाइक आई मीन आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय दिस। ठीक है, तो इस वजह से मैं कोड वाले पार्ट में स्पेशली एंटर नहीं किया था। बट स्टिल तुम में से किसी को भी कोई भी तरीके का कुछ भी डाउट है, तो प्लीज पूछ लो। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कॉलेज लाइफ इन जनरल, कुछ भी। आई डोंट गिव रिलेशनशिप एडवाइस दिस थिंग, ऐसे नहीं, सॉरी, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। ask feel free to ask any kind of doubts that you have. The floor is open. Okay, Aditya, go ahead, Aditya. Right. So I wanted to ask if your resource sheet covers everything that we need to learn, the coding, the maths, It and co- it covers everything. It applications. covers everything. It covers everything. Okay. Okay. It Thank you. it 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 has a very like complete set of resources. उनमें से किसी ना किसी रिसोर्स में तुम्हें मिल जाएगा सारा का सारा जो भी मटेरियल चाहिए होगा तुमको। Thanks a lot. Sir, please show that code again. The machine like ML model that I was telling you about. Sir, that code QR. अच्छा, QR code. Okay. Okay, wait. ये लो, इसका लिंक भी शेयर करवा देता हूँ, एक मिनट को। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना यार, गाइस कैन यू जस्ट लाइक शेयर द डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक। ठीक है, दैट वे पीपल विल बी एबल टू, वहां पर सारी सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, सारी पीपीटी और जितने भी रिसोर्सेज है सारे के सारे वहीं पर ही जाएंगे। तो अगर तुम्हें चाहिए तो लाइक इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, एंड लाइक ऑल ऑफ अस आर एक्टिव ऑन दी सर्वर, एंड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो सीधा वहां पर पूछ सकते हो। तो सर्वर ज्वाइन कर लेना इफ यू वांट। ठीक है, टू give you an overview of the server. Just wait, I'll give you an overview. I shared the Discord server link in the YouTube chat as well. If you can access it from there, that would be great.
Pranjal sir, can you address the doubts? People have raised hands. All right, just give me a moment. Yeah, go ahead. A lot of doubts here. Just a second. Let me call out the names. Akshit Saxena. Go ahead. सर आई वांटेड टू आस्क दैट ये सब चीज़ें हमें कॉलेज में कराई जाएंगी मतलब इससे कोडिंग से रिलेटेड या फिर ये हमें अदर सोर्सेज से परस्यू करना पड़ेगा या ऐसे कोई सोसाइटी से परस्यू करना पड़ेगा या फिर कॉलेज में हमें बताया जाएगा कोर्स मशीन लर्निंग ओके, सो लाइक दो तीन मिथ्स एंड फैक्ट्स ब्रेक कर देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कॉलेज वालों का सिलेबस बहुत प्यारा है, पढ़ाने की कोशिश वो सब करते हैं, पढ़ा कुछ नहीं पाते, ठीक है। मशीन लर्निंग इज अ सब्जेक्ट मेरे को इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, एंड बिलीव मी दैट जस्ट किल्स द मूड, ठीक है। एंड एनीवेज लाइक इट माइट बी माय पर्सनल प्रेफरेंस कि मुझे कॉलेज का पढ़ाया हुआ नहीं अच्छा लग रहा, तुम्हें शायद अच्छा लगे पढ़ना कॉलेज से, बट व्हाट आई वांट टू लेट यू ऑल नो इज कि यार कंप्यूटर साइंस में एक ही खास बात है कि इसके हर एक चीज, हर एक रिसोर्स फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो तुम्हें किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा और ये आपको पढ़ाएगा। यू कैन जस्ट गो टू द इंटरनेट, देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज जहां पर आप जाकर पढ़ सकते हो, एंड आई रिकमेंड दैट ओनली, क्योंकि लाइक सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है, एंड जितना तू उस टाइम अपने आप करके सीखेगा ना, उससे बेटर तो कहीं पर नहीं सीख पाएगा। तो आई वुड से कि लाइक जस्ट गो अहेड और गो ऑनलाइन एंड जस्ट लुक फॉर दोस, कॉलेज पे रिलाई मत करो अपने स्किल्स के लिए, ठीक है। वर्क ऑन योर स्किल्स ऑन योर ओन, दैट्स व्हाट आई वुड से। और दूसरी चीज, सोसाइटी में सिखाएगा या नहीं सिखाएगा कोई, I mean, we do take a lot of workshops, we do take a lot of classes, but in the end, what again my advice would be कि rely on yourself more. इस पर rely मत करना कि कोई और तुम्हें आकर पढ़ाएगा। Societies are a great place to get guidance. You meet an array of people जो कि extremely talented हैं और हर field में काम कर रहे होते हैं। तो societies are great places to get guidance from. They are great places to get like पूछना है, कोई भी डाउट है, फिर कुछ भी अपने आप को इंटरेक्शन बढ़ाना है, अपने आप को लाइक ओपन अप करना है, तो सोसाइटीज आर अ ग्रेट वे टू डू दैट। बट लाइक आई वुड स्टिल से अपने स्किल्स को किसी और के ऊपर मत रिलाई कराओ, जस्ट गो अहेड एंड वर्क ऑन योर ओन स्किल्स। ओके, दैट वुड बी माय आंसर टू योर क्वेश्चन। एक चीज़ पूछनी थी, अच्छा तो फिर इसमें आप कोई कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं जो हम नेट पे सीख सकें इससे? जैसे मैंने रिसोर्स शीट मतलब में जावा जाओ, पहले से सारे कर रखा कोर्सेज है लिखे हुए हैं क्या? हाँ, मैंने स्कूल से मतलब 9th से 12th तक जावा ही की थी, उसमें मैंने ऊप्स करी हुई है मतलब जावा में? लिंग्विश वगैरह तक सीखा है। जावा में ऊप्स लिंग्विश तक करा हुआ है? हाँ हाँ, तो ठीक है। फॉर द पीपल हु हैव डन ऊप्स, व्हाट आई वुड से इज पाइथन कर लो, ठीक है, पाइथन कर लो। एंड उसके बाद जिनको तो है कि लाइक आज लग रहा है कि हाँ मेरे को तो मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, एंड आई विल बी एबल टू लाइक फेस वट एवर, क्योंकि लाइक जस्ट टेलिंग यू कि एमएल की मैथ्स एक बार देखने में ना थोड़ी ओवरवेलमिंग लगती है। तो इफ यू कैन डील विद दैट, गो हेड, एंड देयर इज अ कोर्स ऑन कोर्सेरा, ठीक है, इट्स बाय डॉक्टर एंड्रू एनजी, इट्स मशीन लर्निंग बाय डॉक्टर एंड्रू एनजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वो कर लेना। बहुत डरावना है, मैथ्स देख के बहुत डर लगता है, पर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, पर उसको अगर काफी चीजें समझना है तो इट्स ओके, ठीक है। फॉर द पीपल हु आर स्टिल डाइसी, उन्हें क्या करना है, आई वुड से मशीन लर्निंग A to Z कोर्स है यूडेमी के ऊपर, यू गाइस कैन गो ट्राई दैट आउट, एंड जस्ट सेइंग यूडेमी के कोर्सेज खरीदना मत, टॉरेंट से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मुझसे ले लेना। ऐसे लाइक खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू होती नहीं है, उनके किसी के भी सर्टिफिकेट्स की कोई Sir, can you वैल्यू please नहीं होती repeat the name of the courses? You? है। किसी ने कुछ बोला, क्यों पूछा क्या किसी ने? How can we Guys, contact you? You can just drop your number or email ID. yeah, like I'll sure that's Uh, my phone for number. the number and email ID all part, we will be happy if you join us on the community server. You'll be Yeah, stay connected to us there only, and there not only Pranjal but all of us will be able to answer your doubt. We are a community of over 2,200 members, and exactly. that's the best part you can have to go. That's the and it's not that people from like Thapar University are there only. Like we have people from multiple universities and people who are doing great in their respective fields. We have our seniors joined in on that particular server as well. इसीलिए कह रहे हैं, like machine like that open source server is the best place to get guidance from. तो in fact वहीं पर मैं भी ज़्यादा active रहता हूँ. A lot of the times I don't like I'm not very active on social media, so
there's a possibility that I might not reply there, but हाँ, open source server पे like I'm usually present. ठीक है. To that. Navya, I guess has it. Like Akshay, did I answer your question? कोई question का query रहे तो नहीं ली सर मैं तुम्हारी. सर अभी हाँ आपने जी. बोला था नहीं, थैंक यूडेमी यू सर, हो कोर्स गया। था जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट टोरेंट पे अवेलेबल है, वो कैसे हम कर सकते हैं? यार गूगल करो. टॉरेंट डाउनलोड करना थोड़ी सिखाऊंगा मैं. गूगल कर लेना टॉरेंट, लाइक हाउ टू डाउनलोड, लाइक डाउनलोड फ्रॉम टॉरेंट्स के तुम्हें ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो देख के डाउनलोड कर लेना, बट थोड़ा ध्यान से करना, वायरस होता है कई बार. नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, लाइक मैं मेरी एक ड्राइव बनी हुई है जिसपे मैंने काफी सारे कोर्सेज टॉरेंट से डाउनलोड करके अपलोड करे हुए हैं. तो वो ड्राइव यूजली वैसे तो हम लाइक इन सोसाइटी रखते हैं, बट आई ट्राई कि वो तुम्हें पब्लिक एक्सेस में दे सकूं, क्योंकि उस पर कॉपीराइट लग जाता है अगर ज्यादा पब्लिक हो जाए ना, तो इसलिए मैं सबको वो दे भी नहीं सकता. ठीक है, बट लाइक इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एमएलएससी, श्योर आई कैन लाइक गिव यू द एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर ड्राइव. ठीक है. ओके तो या दैट. Navya, you have a question? Navya, you can unmute yourself. Yeah, actually, I'm an EC student. So, how much time I Okay. should in machine learning or in AI? Like, it is a extracurricular part for me. So, how should I manage my EC studies and machine learning? Any guidance? Uh, I mean, I was in ENC like in my first year itself. तो like believe me, like अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत पढ़ना होता है कॉलेज में, बहुत पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता. ठीक है. Most of the times you are usually free in your college, and उस टाइम पे like तो सब चक्कर मारना बहुत, that is one very important part of college life, but like you have to take some time out for yourselves and work on yourselves. तो वो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज तुमको ही देखनी पड़ेगी. फर्स्ट ईयर तो सभी का कॉमन है, सबका सिलेबस सेम है, तो अपने दोस्तों को देखना. तुम ही में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे होंगे, तुम ही में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि वेले बैठे होंगे, लाइक आई मीन वेले क्या, लाइक घूम फिर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ मजे मत करो, दैट्स लाइक कॉलेज लाइफ का मेजोरिटी ऑफ पार्ट इज मजे करना ओनली, बट लाइक तुम्हें अपने एमएसटीज के बाद ही पता चल जाएगा कि कॉलेज में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है. ठीक है. लाइक इतना मुश्किल नहीं होता, बिलीव मी. अर्पित हेयर हैज अ 10 सीजीपीए. ठीक है. अर्पित इज फ्रॉम टीम एमएलएससी ओनली. ठीक है. तो परितोष हेयर हैज 10 सीजीपीए. अ लॉट ऑफ पीपल हैव 10 सीजीपीए. 9.5 से ऊपर मेरी भी. तो आई मीन कॉलेज में स्कोर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई भी एग्जाम से एक दो हफ्ता पहले पढ़ता है. ठीक है. बट आई मीन ये रियलाइजेशन तुम्हें खुद आनी चाहिए. ये रियलाइजेशन की तुम्हें कितना टाइम दे के तुम्हें कितना अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ये सारी रियलाइजेशन तुम्हें खुद आनी पड़ेगी. ठीक है. तो वो अपने हिसाब से तुम अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, बट ये चीज तुम्हें विद टाइम ही आएगी, तुम्हें कॉलेज के एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी. मैनेज हो जाता है टाइम. देयर इज एनफ टाइम टू डू एनीथिंग इन कॉलेज, बिलीव मी. Thank you, sir. वेलकम. मानस, गो अहेड. यस सर. सर आई हैव अ डाउट. आपने भी जो तो कोर्सेज के नाम बताए थे, क्या आप वो रिपीट कर सकते हैं? श्योर. लाइक टू बिगिन विद, जो कि थोड़ा टिपिकल कोर्स है, दैट इज मशीन लर्निंग बाय डॉक्टर एंड्रू एनजी. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है. इट्स ऑन कोर्सेरा. ठीक है. थैंक यू सर. एंड एक और कोर्स भी है, उसका भी नाम लिख ले इफ यू वांट. ए टू जेड मशीन लर्निंग, को ए टू जेड मशीन लर्निंग करके है. लाइक इट्स द बेस्ट सेलर ऑन यूडेमी, तो वो एकदम से दिख जाएगा तेरे को. तो दैट कोर्स इज ऑन यूडेमी. वो डेटा साइंस श्योर वालों सर. के लिए है. एक बार आप कोर्सेरा का दोबारा बता देंगे? क्या? कोर्सेरा का कोर्स का नाम दोबारा बता देंगे आप? मशीन लर्निंग, लाइक उसका नाम मशीन लर्निंग ही है. उसका कोर्स इंस्ट्रक्टर में जाओगे तो वहां पे डॉक्टर एंड्रू एनजी लिखा आएगा, एंड इट्स अ कोर्स बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. लाइक एक बार ये वाले सर कोर्सेज वन पढ़ लो, मोर फिर डाउट. मैं बता. हाँ बताओ. सर अगर हमें एमएसएलसी ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, मतलब इंटरव्यू के लिए? हाँ, लाइक आई मीन लाइक दिस वर्कशॉप इज नॉट अबाउट दैट, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. Pranjal, I'll लाइक take that up. गो अहेड अर्पित. So if you want to join MLSC, first of all, this workshop was not related to that, but yes, we're a technical society, but you have no absolute prerequisite for joining us. All you need is a hunger for learning. And if you have any doubts regarding the recruitment process, we'll be happy to answer that on the open source community. Yeah. So the point being कि तुम्हें कोडिंग आना या कोई टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी नहीं है. You just need an appetite for learning. Exactly. ओके, थैंक यू सर. एंड इन्हीं के बेसिस पे तुम्हारा रिक्रूटमेंट भी होगा. तुम्हारा जो ओटी होगा उसमें भी लाइक
I mean, you will get to know about the process. It's not very wo. All you need is a will to be a part of the community and give back to the community. That's it. ठीक है? तो just that. Thank you, sir. Manas, आपका क्वेश्चन हो गया और कुछ पूछना है आपको? No, sir. Aryan, you can unmute yourself. सर, तो अगर MLSC के बारे में जानना है तो डिस्कॉर्ड में कौन से चैनल में मैसेज करूं अगर इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को? There is general. You can ask it on general. Apart from that, you can visit our website mlsctit.co.in. उसमें हमारा सारा का सारा MSc का एक ओवरव्यू है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तू MSc की यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर ले. उसमें अबाउट MLSC की एक वीडियो भी है एंड यू कैन look at we've had various sessions and various workshops that were conducted last year also. तो उन सभी की recordings भी पड़ी हैं, तो you can access those as well. YouTube पे just search for Microsoft Learn Student Chapter TIET थापर पटियाला आ जाएगा ऊपर ही. ठीक है? Okay. Also, we have a channel named Connect with Seniors in the Hey There Freshers category and community server specially dedicated to this, so you can contact us there as well. Okay, thank you. Welcome. Anyone else who has a doubt, guys? चलो ये तो थोड़ा वैसे होगा. किसी को कोई technical doubt, machine learning से doubt, कुछ भी just feel free to ask. मैं वही कह रहा था, I don't want to make this session ऐसे काफी complex. Satakshi has a question. Go ahead, Satakshi. Actually, my doubt is how big data is used in machine learning. Big data is one step ahead of machine learning. Again, very fascinating field. ठीक है, machine big data रियल वर्ल्ड डेटास बहुत बड़े होते हैं. जैसे मैंने तुम्हें वो ग्राफ प्लॉट में दिखाया था जिसमें वो ब्लू और ग्रीन और रेड डॉट्स थी. ठीक है, वो बहुत छोटा सा डेटा सेट माना जाता है. ठीक है, बिग डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट बिग डेटा ना, तो वी आर हैंडलिंग मिलियंस एंड करोर्स ऑफ एंट्रीज एट वंस. एंड उन सभी एंट्रीज को आप ऐसे नॉर्मली नहीं हैंडल कर सकते. ठीक है, अगेन उसी टाइम पे हमारा क्लाउड भी आता है, उसी टाइम पे हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज, VMware, कुबरनेटिस, ये सारे के सारे तभी आते हैं. ठीक है, तो वंस यू आर फेमिलियराइज, इसीलिए मैंने बोला था देयर वाज अ स्पेशल focus given on cloud ML just because of this purpose कि एक बार तुम ML कर लो तो do explore the side of ML ops and ML on cloud. ठीक है, तो that way you'll be able to enter the field of big data. Big data is data science का एक extension थोड़ा सा ज़्यादा. ठीक है, that will that allows machine learning engineers to work on very very big data sets and data sets that are on the edge. Okay, thank you. Welcome. And Yash Avasthi, go ahead, man. Yeah, sir. Sir, actually, I had a doubt about you shared us with the roadmap, but then can you reflect upon the time stamps? Like, for example, by the completion of first year, we should reach to which platform, to which, I mean, I know just about Python and stuff like that, but then how much should I complete by the end of first semester or the year? Or you can reflect upon your experience, like after completion of the first year or second year, where you guys were. ठीक है, that is something that's very personal to very individual. It's not like कि कोई time frame decided होता है कि इतने से इतने time में हो जाना चाहिए ये सब चीजें. ठीक है, but what my very general advice to a lot of people, जो कि मैंने खुद भी follow करी थी and I'm very happy that I did, was explore everything. ठीक है, it might sound very cliched. ठीक है, बट यू नीड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, तभी तुम लोग एक चीज में सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगी. ठीक है, आई विल टेल यू, आई इनिशियली स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट. ठीक है, मैंने फ्रंट एंड ट्राई किया, छोड़ दिया, बोर हो गया. बैक एंड ट्राई किया, ठीक लगा, करता हूँ कभी कभी. अभी ऐप डेवलपमेंट भी ट्राई किया, ब्लॉकचेन में भी हाथ डाला. ठीक है, हर चीज ट्राई करी. ML में आया इन द एंड, एंड ML आई थॉट ML एंड IoT ट्राई किया, एंड ML एंड IoT was somewhere I felt कि हाँ, I that clicked for me and I like doing that, so I pursued doing that. ठीक है, तो डोंट गो ऐसे कि बस आते ही मैंने तो सोच के आया हूँ कि ML ही है और ML ही सब कुछ है, तो डोंट गो ऐसे. ठीक है, व्हाट आई वुड वांट यू ऑल इज कि फर्स्ट ईयर में जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो. यू शुड डू CP एज वेल, DSA भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लोगों के लिए DSA क्लिक करता है बहुत ज्यादा, तो you should also explore that particular part as well. And believe me, data DSA is something that will help you in your placements as well. So I mean, what my advice would be to कि फर्स्ट ईयर निकालो एक्सप्लोर करने में इतना कि फर्स्ट ईयर के एंड तक तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें क्या चीज करनी है आगे. ठीक है,
and then उसके बाद just start working on your niche, whatever niche that you make, just start working on it, and it's okay if you don't find your niche yet. And like वही मैं कह रहा हूँ, it's not कि कोई एक fixed timeline होती है, ठीक है, just keep on doing what you want to do। कि कुछ को core computer fundamentals में बहुत मजा आता है, OSD BMS and SC वगैरह में, तो that is also your niche, तो उसमें भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो that's what my advice is कि लाइक तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए बाद में आके, लाइक फोर्थ ईयर में आके सोच रहे हो यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, चलो कुछ और करके देखते हैं, ठीक है। और कर लेना, वो भी क्या पता वो भी वर्क कर जाए कुछ लोग के लिए, बट माय जनरल एडवाइस वुड बी कि फर्स्ट ईयर में लोड बहुत कम होता है, तो फर्स्ट ईयर में करो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, आराम से एक्सप्लोर करो, फर्स्ट ईयर को एक्सप्लोरेशन के लिए रखो, हर एक चीज करो, उसका एक ही दो दो प्रोजेक्ट बनाओ अपने आप से, छोड़ दो करके, उसके बाद अगली चीज पकड़ लो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो स्विच टू अनदर फील्ड, दैट्स इट, ठीक है। बट लाइक अगर तू मेरा एमएल का पूछ रहा है पर्सनल, तो मेरा ये था कि मैं अराउंड कब स्टार्ट हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था, लाइक बट वही है कि मेरा कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज का देखने का स्पीड इज वेरी हाई, तो लाइक जो पर्टिकुलर कोर्स लोग 3 4 या 6 महीने में कंप्लीट करता है, वो मैं बहुत जल्दी कर गया था, तो उसके बाद बट वो टाइम बैलेंस हो जाता है, वो सारा का सारा तेरे ऊपर है कि तू किस स्पीड से देखता है, फिर कुछ भी देखता है। बट हाँ, आई मीन मशीन लर्निंग की एक बेसिक ग्रास पानी आपको 2 3 महीने में आनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से रहता है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन थिंग, ठीक है, लाइक एक बारी को शुरुआत में टू बिगिन विद, कि अगर एक जगह अटक गए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। बट दिस इज समथिंग यू ऑल विल रियलाइज योरसेल्फ, इसमें मेरी एडवाइस कोई काम करेगी भी नहीं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। बीच में यार किसी ने हैंड रेज किया था, फिर कम लाइक कर दिया नीचे, लाइक ऐसे कोई शर्माने की जरूरत नहीं, यू कैन आस्क व्हाटएवर डाउट्स दैट यू हैव, आई आंसर दोस। एंड आई वुड प्रेफर लाइक अगर बाकी टीम में से भी कोई भी लाइक टीम एमएलएससी में से कोई आंसर करना चाहे, तो दे आर हाईली लाइक इनवाइटेड, ठीक है। लाइक सर हम लोग तो तुम, हाँ हाँ बोलो मानस। सर मेरे पास एक और डाउट है कि सर जैसे हमें ना, जैसे आपने बताया कि कोर्सेज अगर यूडेमी या कोर्सेरा वगैरह के कर लें तो पेड ना लेके, मतलब जो टॉरेंट वगैरह कर लें, है ना। तो सर जैसे हम जैसे कोई कोर्स करते हैं तो हर कोर्स के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर हमें अगर आगे कभी किसी जॉब के लिए किसी भी चीज के लिए हमें वो सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, नहीं होगी, प्रूफ करने के लिए कि हाँ हमें आता है। कोर्स सर्टिफिकेट इज समथिंग दैट यू अप्लाई जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स ना हो, अगर तुमने कोई चीज अच्छे से सीखी है तो गो मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैट, एंड उस प्रोजेक्ट से बड़ा कोई प्रूफ नहीं है कि आपको वो चीज आती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेट्स के चक्कर में अपनी लाइक देयर आर सम सर्टिफिकेशन दैट आर वेरी वैल्यूएबल, जैसे डीप लर्निंग है कि सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, या फिर एडब्ल्यूएस की क्लाउड प्रैक्टिशनर की, क्लाउड में तो खासकर सर्टिफिकेशन चलती हैं, पर वो फिर ये ऐसे कोर्स एरा और इन सब पे नहीं मिलेगी सर्टिफिकेशन। वो सर्टिफिकेशन अलग से आपको 5 5 6 6 हज़ार रुपए दे के लेनी पड़ती है, वो सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यूएबल होती है, ये वाली इतनी कुछ खास नहीं, ठीक है। सर ऐसी सर्टिफिकेशंस के कुछ कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? बताया ना, जैसे डीप लर्निंग एआई का होता है, टेंसर फ्लो प्रैक्टिशनर एक सर्टिफिकेशन है, एमएल में जो चलती है, फास्ट एआई एपीआई की सर्टिफिकेशन है, वो बहुत पॉपुलर है। सिस्को की आती है, वो सारी की सारी आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत पॉपुलर है। सिस्को की आती है, रेड हैट की आती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, क्लाउड में एडब्ल्यूएस की और एज्योर की आती है। जीसीपी की तो आजकल तुम लोग शायद कोई चैलेंज वैलेंज लगा रहे हैं, वो गूगल क्लाउड का एक चैलेंज भी चल रहा है, तो उसमें ही मिल जाती हैं, पर वो फिर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। एडब्ल्यूएस की वैल्यू बहुत ज्यादा इतनी की एडब्ल्यूएस का वो सर्टिफिकेट आपकी जॉब सीधी लग जाती है, तो इस तरीके की भी सर्टिफिकेशन है। पर वही है, ये डेफिनेटली यूडेमी वाली या फिर ऐसे कोर्सेरा वाले सर्टिफिकेट्स कितनी वैल्यू नहीं होती, द सेम। थैंक यू सर। वेलकम। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो बता दो, अदरवाइज विल जस्ट रैप अप दिस सेशन, ठीक है। आई गेस ऑलरेडी काफी देर का हो गया है, 1.5 घंटे का हो गया है, ठीक है। तो विल जस्ट रैप अप दिस सेशन, ठीक है। ओके, विल जस्ट रैप अप दिस सेशन। Tarunpreet, you can conclude. Yeah, cool. Okay, thank you so much, Pranjal sir, for taking your time out of your schedule. I guess this information was really informative and stimulating for all of you. And most importantly, for the ones who are actually gonna pursue their career in the fields of machine learning, deep learning, and intelligence. So, all I hope thanks to that. your enlightening words that inspired so many people out there. But as they say, words may inspire, but action creates a change. So, I hope after this webinar, many of us will explore this field of machine learning
and become future machine learning engineers. I would Yeah, like that as well. I would also like to express my gratitude to all the participants of the webinar for their presence and contribution to success. We would love to hear your doubts on the open source Discord community server. All the resources will be shared there too. Stay connected with MLSC at there for the further updates. Don't forget to explore GitHub and open source. And with this, we conclude the celebration of Hacktoberfest 2021 at MLSC. Happy learning and happy hacking. Thank you very much. Thanks a lot, everyone. Thank It you was so a much, lovely sir. session, and you all were a great audience. Thanks a lot, Taran, Yamini, and Yashika. You guys were Thank you, amazing sir. hosts. Thank you, sir. And yes, then again, I would like to thank my entire team of MLSC. So yeah, there's that. So let's end this particular meet. All right. Okay. Bye, guys. I'll be leaving this meet. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Last note, in MLSC, ML stands for machine learning. That. Yeah.